Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. Today we are going to start lesson 16, a dialogue by Usman Naveed. This lesson is written in form of a dialogue among teacher and two students, Frasat and Saleem, who discuss the serious issue of child abuse. Through this conversation, we learn about the causes, effects, and solutions related to child safety and the responsibilities of family, religion, government, and media. Subscribe, like, share. First of all, we will discuss about the shocking news. Frasat and Saleem are sitting in the library reading a newspaper. Frasat और सलीम लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहे होते हैं. They find a heartbreaking news report about another case of child abuse. उन्हें बच्चों पर जुल्म का एक और अफसोसनाक वाकया पढ़ने को मिलता है. Their teacher arrives and notices their sadness. उनका टीचर आता है, बच्चों के चेहरों पर अफसुर्दगी देख के उसकी वजह पूछता है. Here comes what is child abuse. The teacher explains that child abuse means mistreatment or cruelty toward a child. Child abuse का मतलब होता है बच्चे के साथ बदसलूकी करना या उस पर जुल्म करना. It has four main types. इसकी 4 इकसाम है. Neglect, लापरवाही, emotional abuse, जज्बाती अजियत, physical abuse, जिस्मानी तशद्दुद, and sexual abuse और जिनसी ज़्यादती. It can happen inside the home, in school or even by strangers. ये जुल्म घर, स्कूल या माशरे में कहीं भी हो सकता है. Here comes role of religion and family. The teacher says that Islam gives special importance to children. टीचर ने बताया कि इस्लाम में बच्चों को खास मुकाम हासिल है. Children are considered a trust from Allah. वो अल्लाह की अमानत हैं. They have the right to food, clothing, education and protection. उनके हकूक में शामिल है खाना, लिबास, तालीम और तहफ़्फ़ुज़. A family must provide love, safety and guidance to raise them properly. एक खानदान की जिम्मेदारी है कि बच्चे को मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और अच्छी तरबियत दे. इस्लाम ने हमेशा बच्चों के हकूक पे जोर दिया है. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे. Here comes role of government and law. The teacher tells that Constitution of Pakistan Article 25 guarantees the protection of children and family. पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 25 बच्चों और खानदान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है. The Punjab government has created the Child Protection and Welfare Bureau. पंजाब हुकूमत ने Child Protection and Welfare Bureau कायम किया है. Pakistan also signed the UN Convention on the Right of Child 1990. पाकिस्तान ने 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ का मुआहिदा भी मंजूर किया. ये सब कदम इसलिए लिए गए कि हर बच्चा अमन और इज्जत के साथ जी सके. Here comes global problem. आलमी सतह पर खतरात. The teacher explains the children suffer from poverty, malnutrition and lack of education. टीचर ने बताया कि दुनिया भर में बच्चे गुर्बत, ग़िज़ाई कमी और तालीम की कमी से मुतासिर हैं. In war zones, children face violence, slavery and trafficking. जंगज़दा इलाकों में बच्चे तशद्दुद, गुलामी और स्मगलिंग का शिकार होते हैं. Many are forced to become child soldiers or migrants. कुछ को जबरदस्ती फौजी बना दिया जाता है. ये सब देखकर समझ आता है कि हमारी दुनिया कितनी नाइंसाफी से भरी हुई है. Now we will discuss about the education and awareness. Education is the best tool to reduce poverty and child mortality. तालीम गुर्बत कम करती है और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाती है. As Cream D. Crow said, where girls are educated, the economy and living standards rise. जैसे क्रीम डी क्रो ने कहा, जहां लड़कियां तालीम याफ्ता होती हैं वहां खुशहाली बढ़ती है. Knowledge helps protect children's rights and build a safer society. इल्म बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे मजबूत ज़रिया है. स्टूडेंट्स एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि ये बच्चों के फ्यूचर की सिक्योरिटी होती है. Here comes the role of media and social media. The teacher says that media and social media both plays a key role in child protection. उस्ताद ने बताया कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करते हैं. Social media helps in spreading awareness but can also be dangerous if misused. सोशल मीडिया आगाही फैलाने में मदद देता है, मगर गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है. Parents must supervise their children's online activities. वालिदैन को बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखनी चाहिए.
انٹرنیٹ نالج کا ذریعہ بھی ہے اور خطرہ بھی ہے، اسے وائزلی یوز کرنا چاہیے۔ جووینائل ڈیلنکوینسی، جووینائل بولتے ہیں ینگ ایج کو، ڈیلنکوینسی کا مطلب ہوتا ہے جرم۔ جووینائل ڈیلنکوینسی means crimes committed by minors۔ نابالغ جرائم سے مراد وہ جرائم ہیں جو نابالغ بچے یا نوجوان کرتے ہیں۔ The causes include poverty, broken homes, illiteracy and bad company۔ اس کی وجوہات ہیں غربت، گھریلو مسائل، جہالت اور بری صحبت۔ Such children should not be punished like adults but treated with care and counseling۔ ایسے بچوں کو بڑوں کی طرح سزا نہیں بلکہ محبت، مشورہ اور علاج دینا چاہیے۔ بچے پنشمنٹ سے نہیں بلکہ رہنمائی سے سدھرتے ہیں۔ Next comes the treatment and hope۔ علاج اور امید۔ Victims of child abuse can recover through counseling, love and family support۔ چائلڈ ابیوز کے متاثرہ بچے مشاورت، محبت اور خاندانی سہارے سے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ They should never be blamed۔ انہیں کبھی الزام نہیں دینا چاہیے۔ With care and therapy, they can live a happy and successful life۔ توجہ اور علاج کے ساتھ وہ خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہر بچہ قیمتی ہوتا ہے، اگر ہم اس کا زخم بھر دیں تو وہ پھر سے چمک سکتا ہے۔ Here comes the moral of this story۔ The lesson gives a message that protecting children is a shared duty of family, government and society۔ یہ سبق یہ پیغام دیتا ہے کہ بچوں کا جو تحفظ ہے وہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ Every child deserves love, respect and safety۔ ہر بچہ محبت، احترام اور تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ Thank you for watching this lecture on lesson 16, a dialogue۔ If you find it informative, please like, share and subscribe for more English lessons۔